Namaskar. Myself, Dr. Sneh Kumar Mishra, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture of research methodology. Today we will discuss on this topic of interview and its main objectives. So in today's topic, in today's lecture, we are discussing about interview technique and the various techniques of interview. Interview is itself broadly used method in social researches and in many other fields. So, in today's class, we will discuss about interview, how we can use the interview method in our social researches and how it works, what is the concept of interview method. So we will discuss on these topics along with the objectives, main objectives of interview method. What we will seek through the interview method in any kind of research or any kind of study, we will discuss upon it. So first we will discuss in English and then we will discuss this same discussion in Hindi. So let's start. I have noted here some points to clarify you in the manner to understand this topic. First, I have written here in short that interview is a conversation with a motive. Conversation with a motive. Try to imprint this sentence in your mind that interview is a conversation with a motive. If you remember that sentence, and it is not so difficult to remember this sentence that interview is a conversation but with a motive. It is not a meaningless conversation, it is not gossiping, it is a meaningful conversation. Okay. Utilitarian. It has some social utilitarian purpose in it. So, interview is a meaningful conversation with a motive. With motive. So, people are discussing with a motive, face to face. That will be called interview method. Okay. So there are possibilities that persons conversation anything with a motive for knowing better these things or to clarify its substitutes and its parts of the thing which they are trying to discussing about. In social researches, we are wanting to have a study on any group or any community. So for that community or that group, we try to clarify their social life and their surrounding, their life events, their emotional structure, their intelligence capacity, the level of their social awareness and the scientific approaches, how they use the scientific approaches in their daily life and their social interactions in their social life. So these are all things which one can want to study in any kind of group or any kind of community. So interview is a method, it's a massive method to reveal these things face-to-face conversation. In face-to-face conversation, we can reveal these things which we have discussed about a few moments ago. That it is a very powerful method in interview. A researcher is present in the person which he want to study, or group which he want to study, or the group which is a part of his social research, which is a part of his or her research topic, and he will start conversation with one-on-one peoples, or it may be a group conversation. So
whichever is the case. But the motive is we want to conversation with the people which are related to our research topic and which can gives us the information which we want regarding to the topic, regarding to their social life, regarding to their social activities and their personal life, their personal views, their wisdom, their intelligence, the tendencies of their intelligence and wisdom, in which direction they are thinking and they are behaving, and their excellence, in which direction their excellence is working. These are the questions and motives behind interview method in social researches. Okay, I think you have understand this concept of interview, that it may be a group conversation or one-on-one session, but it is a direct method to study. So, like observation method. In observation method, the observer is directly present to the situation, to the people which he wants to study. Okay. In interview method, the interviewer is also directly present to the respondents which he want to interview with the conversation about some objectives, some motives which are included in his or her research topic. Okay, I think I have cleared it and you can understand it. So we are discussing now that what are the objectives behind interview method. Try to understand. So first, an overview about these objectives. The first one is personal information. Personal information. The second one is direct contact. Direct contact. Next is observation possible. Observation possible. Next is knowledge in multi-dimension. Knowledge in multi-dimension. Okay. The next one is formulation of hypothesis. Formulation of hypothesis. The next one is qualitative analysis. Qualitative analysis. The next one is verification of data. Verification of data. One by one, I will clarify you these objectives behind the interview method, and you will perfectly able to understand how the interview method works in social researches and what are the objectives behind this interview method, which is broadly used and which is popularly used in all kinds of social researches and other kinds of things also which are related to our social life, in job purpose, in study purpose, in many other fields of our social life, professional life. Okay, we are using interview method. So we are trying to ponder upon the first objective which we have mentioned here is a personal information. Personal information. With the help of interview method, one can get the personal information about the person which he want to study, the respondent which he want to study, which is related to his or her research topic. The researcher go to the person and one-on-one conversation with the objectives which are related to the topic, research topic. So for that research topic, fulfilling the criteria and objectivities of the topic which we want to study in our social research, with these objectives, trying to fulfilling the objectives of that social research, interview method, these kinds of a conversation with a motive, directed to a special motive is performing by the researcher with
the people with the respondent which we want to study to fulfill the demands of objectives of the social research. Okay, so we can say that we can gather personal information with the direct contact of respondent in our study. So the person is directly involved with the researcher in this method. So he can give his personal information and we can collect only in this method. Okay, only in this method we can collect the direct information from the respondent. Any other method, the questionnaire method or the telephonic survey or the Google forms or any other forms which we are using in this internet generation, we cannot use it in compared to direct interview method. So with the direct interview method, we can encounter this person which we want to study directly, and with this direct perception we can gather the personal information about any motive which we want to study, which is related to our objectives of research. We can directly in conversation with that people, with many other people which are our respondents. We can have the group interview also. We can discuss about the motives of our social researches. So this is the only environment in which you can get the inner information and the authentic information which you can rely upon, which the experts can rely upon. So the reliability of the research is maintained through the observation method and interview method. If the observation method and interview method performed their work, then the reliability is maintained almost 60 to 70% in your research. So interview method is objected to collect the personal information with the respondent with direct conversation. Okay. The next is direct contact. Thank you, question. The objective is direct contact. Why? Because we are trying to analyze the people which we want to study directly. Because only in direct observation we can observe them rightly and in their natural social environment. So one has to go to the incident place and the place, the people which he wants to study in his social research and direct encounter with that people. He wants to get the information, he will in deep conversations with those peoples, and it is a very strong method to develop the direct contact with your research topic and the people which are related to your research topic. So it will develop the direct contact and it will maintain the objectivity of your research. Okay, now next topic is observation possible. Because the researcher goes to the respondent directly. He will collect the data directly, maybe with his interview schedule, according to the interview guide. He is collecting the data directly. He is encountering the respondent directly. So, in this manner, the criteria of observation method is also fulfilled, because in observation method we know that we are collecting the information directly with our own eyes and our awakened senses, without any kinds of prejudices or any kinds of our personal likes and dislikes or our
ideologies. Okay. So intentionally we are using interview method to maintain the observation demands also. The demand of the observation method is also fulfilled in direct interviews. So it is the quality and objectivity of the observation method, and it is a main motto behind the interview method. Next is knowledge in multi-dimension. Try to understand it. Knowledge is in multi-dimension. So in this method we are trying to reveal the hidden factors which one cannot easily observe, but with interview, but with conversation with that peoples which you want to study, which are the part of your study, which are the respondent, the sample size of your study. Then you can have a deep conversation with that peoples and try to fulfill the objectives of your research. Through that conversation, many other things which are hidden, which cannot be easily observed or tally with other things or other methods, is easily recordable and observable through the interview method. In one-on-one conversation or in group discussion, in group interview, we can collect those hidden aspects of that particular community or that particular group, which are hidden and which are not easily expressible with other techniques. So it is a merit of interview method that it can give us multi-dimensional knowledge about the people or about the group or about the community which we want to study. Okay, next. Formulation of hypothesis. Try to understand. When the researcher is go to the incident place, the people which he want to study, and have an interview session with those peoples which he want to study with the respondents of many types and many kinds. So these different kinds of respondents can give basic information and many other useful information in regarding to our research topic. So the formation of hypothesis, the formulation of hypothesis is easier when we are interviewing the respondents of our concerned research area. So with the help of interview method, the formulation of hypothesis is much more easier than before if we are not doing the interview method with the respondents. So it is useful in gathering the information, and because of this base of information, this base of the collecting data and collecting the whole environments hints which the person want to study in his social researches. With those kinds of hints which he gets in his interview, on the basis of this knowledge, he can develop a more reliable hypothesis about his research topic. So it is useful in this manner also. Next is qualitative analysis. So the interview method is a qualitative analysis. In this, we are not focusing on, we are studying how much things, but what kind of things. Our emphasis is on quality, not quantity. How much people? It is not important. How much things? It is not important. How much incidents? It is not important. But the behavior of the peoples,
their qualities, their emotions, their intelligence is important, and we are trying to analyze their qualities. So it is a qualitative study, not quantitative study. So interview method gives us qualitative data, not quantitative data. Okay. Next topic is verification of data. We can use many kinds of techniques in our researches. Okay, we can use scientific equipments also. We can use electric equipments also. We can use videography. We can use cameras. We can use audio recorders. We can use other things, internet, Google Forms, and many other things which are using in social researches by many scholars down the ages. But as we see that the techniques which we are using, the equipments which we are using, whether they are electronic equipments or they are scientific equipments which we are using to study the social event, the social group or social communities, social life, how we can verify that data which we have collected with these kinds of different techniques. So when we go to the interview and we are interviewing the person and we are in a deep conversation with those persons which are our respondents in our social research, then it is much more easier, okay, to verify the data which we have gathered from other techniques and other scientific or electronic equipments. So it is useful for verification of data, and it is one of the objectives of interview method to verify the data which we have collected from other techniques. So we have discussed this conversation about interview method, how the interview method is worked for many scholars, and how we can use in our study the interview method, the concept, the procedure, the main objectives behind the interview method which we have discussed. And now I am explaining it in Hindi also. So again we are discussing it. हम आज चर्चा कर रहे थे साक्षात्कार विधि के ऊपर। साक्षात्कार विधि क्या होती है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि साक्षात्कार क्या होता है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है सामाजिक अनुसंधानों में। तो समझने का प्रयास करिए कि साक्षात्कार जो है वो उद्देश्यपूर्ण जो है संचार है। ओके, उद्देश्यपूर्ण संचार, उद्देश्यपूर्ण बातचीत, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और स्वाभाविक रूप से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये चर्चा करेंगे, ये चर्चा होगी जो रिसर्च हम कर रहे हैं, जो अनुसंधान हम कर रहे हैं, उस अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं, उनके उद्देश्यों की, अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम ये चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम उस व्यक्ति के साथ भागीदार होंगे जो व्यक्ति हमारा उत्तरदाता है हमारे सामाजिक अनुसंधान के विषय में, उस क्षेत्र से संबंधित है जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र। उस चर्चा के बाद ही हम जो है उस डाटा पे भरोसा कर सकते हैं, उस तथ्यों, एकत्रित तथ्यों के संग्रहण पे भरोसा कर सकते हैं जो हमने उन लोगों से प्राप्त किया। और ये बहुत आवश्यक विधि है और बहुत पॉपुलर विधि भी, बहुत हम कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में उपयोग लाने वाली विधि है। सभी प्रकार के सामाजिक अनुसंधानों में ये हम साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार उद्देश्यपूर्ण बातचीत है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब बातचीत की जाए तो वो साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार उद्देश्यपूर्ण बातचीत है और यह किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की गपशप नहीं है, यह किसी भी प्रकार से वन वे कन्वर्सेशन नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इंटरव्यू इज अ वन वे कन्वर्सेशन, नो, इट इज़ ऑलवेज द टू वे कन्वर्सेशन। तो हमेशा ये दोनों तरफ से होगा और ये सघन चर्चा होगी। इसमें दोनों व्यक्ति जो हैं प्रत्यक्ष रूप से, मूर्त रूप से एक दूसरे के सामने
उपस्थित होने ही चाहिए। हम इसमें एक से अधिक प्रकार के इंटरव्यूअर्स का, साक्षात्कारकर्ताओं का सहारा ले सकते हैं, अध्ययनकर्ताओं का सहारा ले सकते हैं। ये हो सकता है एक ही अध्ययन के लिए, परंतु ये डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे पास तो हम बहुत सारे लोगों का अध्ययन एक साथ एक ही अनुसंधानकर्ता करे, मुश्किल कार्य है। तो हम अलग अलग इंटरव्यूअर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं और उन्हें उन अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके ला सकते हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस के बाद हम शोध की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा होता है जब हमारा अध्ययन क्षेत्र बड़ा, हमारे रिस्पॉन्डेंट्स बहुत ज़्यादा, तब ऐसा होता है। और हम चर्चा करेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या है ये जो इंटरव्यू साक्षात्कार की पद्धति है उसके। देखिए, हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को रेखांकित किया है, जिनमें सबसे पहला है व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त होती है हमें अध्ययन के दौरान जब हम साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि साक्षात्कार में हम उस व्यक्ति के सामने मूर्त रूप से उपस्थित होते हैं और चर्चाएं करते हैं। तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है, इस प्रकार के संप्रेषण में बहुत सी ऐसी जानकारियां, व्यक्तिगत जानकारियां हमसे वो जो हमारा उत्तरदाता है वो साझा कर पाता है, जो कि किसी दूसरे माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, गूगल फॉर्म्स के माध्यम से या और किसी इंटरनेट के दूसरे माध्यम से वो नहीं दे पाएगा। तो ये प्रत्यक्ष रूप से सामने उस व्यक्ति के उपस्थित होकर के अपने विनम्र व्यवहार के द्वारा जब हम उस व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं तो वो उत्तरदाता बहुत से ऐसे अपने पक्षों को उजागर करता है, बहुत सी ऐसी अपनी भावनाओं, विचारों और मतों को उजागर करता है जो हमारे अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हो सकते हैं और जिन्हें हमें रेखांकित करना अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक हो सकता है, जो कि और किसी दूसरी विधि से संभव नहीं हो पाएगा। चलिए, अगला है प्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता, हम वस्तुनिष्ठता की क्वालिटी को, है ना, बरकरार रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता हो। तो जब तक कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक कि जो अध्ययन करता है और जिनका वो अध्ययन कर रहा है उन उत्तरदाताओं के बीच, उस अध्ययन क्षेत्र के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा, तब तक कि हम वस्तुनिष्ठता की उस अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये उद्देश्य होता है कि साक्षात्कारकर्ता जो है स्वयं जाकर के जब उत्तरदाताओं का अध्ययन करेगा, उनसे चर्चाएं करेगा, उद्देश्यपूर्ण बातचीत करेगा, उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण करेगा, तो इस संप्रेषण के माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति होगी अनुसंधान की, जिस विषय को लेकर के अनुसंधान हो रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है ये उद्देश्य होता है साक्षात्कार का, ये हमें जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है स्थापित करना चाहिए जिन भी लोगों का, जिस भी समुदाय का, जिस भी समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं उनसे। अगला ऑब्जर्वेशन पॉसिबल, मतलब अवलोकन संभव हो पाता है साक्षात्कार में। हम साक्षात्कार करते हैं तो सभी हम अवलोकन भी कर लेते हैं। बिना अवलोकन के साक्षात्कार संभव नहीं। बिना साक्षात्कार और अवलोकन जो है एक दूसरे पर निर्भर, अंतर निर्भर है। बिना अवलोकन के साक्षात्कार नहीं हो सकता, बिना साक्षात्कार के अवलोकन नहीं हो सकता। दोनों चीजें किसी न किसी स्तर पर तो हमें साक्षात्कार का भी सहारा लेना पड़ेगा, वो ना अवलोकन होना रह जाए, पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक उसमें जो टोटलिटी का गुण है, संपूर्णता का गुण है, वो नहीं आ पाएगा। किसी न किसी मात्रा में अवलोकन विधि के लिए साक्षात्कार भी आवश्यक होता है, पूर्ण रूप में नहीं तो आंशिक रूप से। चलिए, तो साक्षात्कार जो है वो अवलोकन को अधिक संभव बनाता है और अधिक पूर्णता प्रदान करता है। आगे, नॉलेज इन मल्टी डायमेंशन, बहु आयाम में ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे आयामों में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, जिनके माध्यम जिसे हम किसी और दूसरे माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तरदाता से हम
विश्लेषण में, गहरे चर्चा में संलिप्त होंगे तो उस संलिप्तता में हो सकता है कि उत्तरदाता अपने उन पक्षों को भी उजागर करे या उन मतों को भी उजागर करे जो कि वो सामान्य रूप से नहीं करता है, हो सकता है। तो उससे हमें अपने अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हो सकते हैं और केवल ये साक्षात्कार विधि में ही पॉसिबल है, संभव है। ये इसकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता है और ये उद्देश्य भी है साक्षात्कार विधि का कि हम इसके माध्यम से बहुआयामी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस विषय के संबंध में, उस टॉपिक के संबंध में जिसको लेकर के हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं। आगे देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कल्पना का निर्माण। देखिए साक्षात्कार के द्वारा हम कल्पना का निर्माण भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें बहुत जानकारी प्राप्त हो जाएगी, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, बहुत सारी ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा उन लोगों से जिन लोगों से हमने साक्षात्कार लिया है और उसके माध्यम से हम एक बेहतर उपकल्पना का निर्माण, एक भरोसेमंद उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। ये संभव हो पाता है। ओके, आगे देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये गुणात्मक विश्लेषण, गणनात्मक विश्लेषण नहीं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों की भावनाएं कैसी हैं, लोगों के विचार कैसे हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है। नॉट इन क्वांटिटेटिव डायमेंशन बट इन क्वालिटेटिव डायमेंशन। गुणात्मक आयामों में जानने का प्रयास करते हैं उनके जीवन, उनकी भावनाएं, उनके विश्वास, उनके मत, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उनके जीवन की गुणवत्ता और इसी तरह से और अन्य गुणात्मक पक्ष हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला है वेरिफिकेशन ऑफ डाटा, तथ्यों का पुनः संधारण। तो ये कैसे हो पाता है? पुनः जांच हो पाती है, पुनः संधारण हो पाता है। जो भी अन्य विधियों से, चाहे हम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की सहायता से या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की सहायता से जितने भी प्रकार के तथ्यों का संग्रहण किए हों, परंतु उन तथ्यों को जब हम साक्षात्कार विधि के द्वारा उस व्यक्ति से स्वयं चर्चा करते हैं और वो उसके बारे में हमें जानकारी देता है, तभी जो है वेरिफिकेशन, जांच, पुनः जांच हो पाती है, पुनः संधारण हो पाता है उन तथ्यों का जिन तथ्यों का हमने संग्रहण किया है साक्षात्कार विधि के माध्यम से। ओके, तो तथ्यों का संधारण हो पाता है, तथ्यों की पुनः जांच हो पाती है साक्षात्कार विधि के माध्यम से। जो अन्य विधियों से कलेक्ट किए हुए, एकत्रित किए हुए डाटा है उनका। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की आज इस विषय पर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।